हाय नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। 21 सितंबर 2025 संडे सोलर एक्लिप्स इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। आप सभी को पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दिस सोलर एक्लिप्स इज़ टेकिंग प्लेस इन वर्गो साइन। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र तीसरे चरण में ये एक्लिप्स लगेगा। Good part is the starting time is 10:59 p.m. and in the night, and the ending period is 3:23 a.m. as per Indian Standard Time. So it is very much evident कि ये इंडिया में रात को लगने जा रहा है. So sun is not visible at that point of time in India. Therefore ये eclipse इंडिया में visible नहीं रहेगा और ये सदर्न हेमिस्फीयर में एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज जिस समय हमारे यहाँ पे रात होगी वहाँ पे दिन होगा और उस समय वहाँ पे ये विजिबल होएगा. There are few interesting facts about this solar eclipse which I just wanted to bring to your notice. Firstly, as per the Kurma Chakra of mundane astrology, Medini astrology, the Uttar Falguni Nakshatra represent a southern part of the world, and it is a coincidence, rather it is an evident that the astrology is a scientific technique where it is already mentioned that Uttar Falguni Nakshatra denotes the southern part or the southern side. And incidentally, this eclipse is falling in the southern hemisphere. So it will be visible in the south of Australia, Queensland, Tasmania, and Victoria, New Zealand, Fiji, Antarctica. एक और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि the nakshatra lord is sun, but the sub lord is Saturn. So sun and Saturn are close when it is getting the eclipse in this Uttar Falguni Nakshatra third charan. अब इसके क्या मतलब हैं? अगर हम इसको डिनोट करना चाहें, डिकोड करना चाहें, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट विद द अथॉरिटी दर्शाता है. So there is a very likelihood that the countries where this eclipse will be visible, there can be some unrest or restlessness against the policies, government and stuff like that. दूसरा ये इक्विनॉक्स है, 21st of September, day and night is going to be equal, last day of the Pitrapaksh. So there are very deep meanings into all this, but good part is that northern part of the world, especially India, is out of this eclipse because it is not visible. तो इंडिया में इसका कोई भी सूतक नहीं लगेगा, बट जहाँ ये एप्लीकेबल है वहाँ पे 10:59 AM से सूतक लग जाएगा. सूतक लगने के दौरान बेसिकली जैसे हम हर वीडियो में बताते आए हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए खाना पीना, अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस अलाउ करती हैं तो. The logic or the reason is that when the sun is under eclipse, the ultraviolet rays are very weak because sun in itself is not in its right strength. So the germs which can affect the food are dominating. So this is one of the reasons why it is said कि सूर्य ग्रहण के समय पे भोजन अवॉइड करें, एटलीस्ट बासी खाना ना खाएं, राइट. सेकेंडली, मंदिर बंद हो जाते हैं तो कोई भी दिया बत्ती ज्योति नहीं जलानी चाहिए ड्यूरिंग द एक्लिप्स. मंत्र उच्चारण is the best thing which one should do during eclipse. Although इंडिया में उस समय रात होगी, बट अगर आप कर सके तो it will be like very good for you. So जो मंत्र इस दिन करने चाहिए सोलर एक्लिप्स के समय पे, बिकॉज मंत्रास विल गिव यू
1,000 10,000 times credit to your good karma. तो अगर आप एक मंत्र करेंगे उसका आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा. So the mantras which we should do during a solar eclipse are Om Namah Shivaya, Mahamrityunjay Jap, and sun is in problem during the eclipse. So the least we can do is Aditya Srotram and गायत्री मंत्र एंड whosoever is your deity, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनके मंत्र करें. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट, बट अगर आप मंत्र उच्चारण करेंगे उस समय पे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा. द नेक्स्ट डे, बिकॉज संडे रात को ये लगेगा तो मंडे मॉर्निंग में द डोनेशंस हैव बिग इम्पैक्ट. तो आप अगले दिन you can go to the temple, or to the needy people you can give donations like wheat, jaggery, copper, things made up of copper, right? तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा डोनेट करेंगे अगर तो that will give you benefit. Since this eclipse is falling in Virgo sign, so people who are having Virgo sign, Virgo moon sign, Virgo ascendant, they should be a little careful and cautious in their coming few months, and don't take any major decisions, life impacting decisions. So all in all, it's not having much of an impact on India per se and the northern hemisphere. So let us see. I mean, this is what we can say for now. The concentration of all this is somewhere in the southern hemisphere, so that part would or might get affected. Yeah, so that is from our side, and thanks for your time, and we'll try to get in more and more informative astrological videos as and when they are needed. Thank you so very much for your time, and God bless all. Thank you.